मोहन आउ गोठ जीवा मन नाही रे थरे मुरली दिया तु बाई आउ गोठ जीवा मन नाही रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई देखो धेनु जेते अनाई छंती चकीते देखो धेनु बच्चा जेते अनाई छंती चकीते गोपर बालक कुला सरबे हेलेनी ठुला गोपर बालक कुला सरबे हेलेनी ठुला रही छंती तोते तकाई रे थरे मुरली दिया तु बाई रही छंती तोते तकाई रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई आउ तू छुर कले मुरली न बजाइले आउ तू छुर कले मुरली न बजाइले खेलिबु कह कातुले बुलिबु कह कामेले खेलिबु कह कातुले बुलिबु कह कामेले एक था कि काकू का जानु नाहु रे थरे मुरली दिया तु बाई एक था कि काहू जानु नाही रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई हृदय जमुना कूले हसी खेली भाव भोले हृदय जमुना कूले हसी खेली भाव भोले राजा करिबु रे तोते भेटी फूल हार गेते राजा करिबु रे तोते भेटी फूल हार केते मन भरी गुंथी छु तो पाई रे थरे मुरली दिया तु भाई मन भरी गुंथी छु तो पाई रे थरे मुरली दिया तु भाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई थरे बंसी बजाओ कन्हाई रे थरे मुरली दिया तु बाई तिनी भंगिया ठाणी रे पितबास काछेणी रे तिनी भंगिया ठाणी रे पितबास काछेणी रे मननी कुंज कानने निवेदन शुभ दिने मननी कुंज कानने
নিবেদন শুভ দিনে आमे पाद देबु तोर धोई रे थरे मुरली दिया तू भाई आमे पाद देबु तोर धोई रे थरे मुरली दिया तू भाई थरे बंसी बजा कन्हाई रे थरे मुरली दिया तू भाई थरे बंसी बजा कन्हाई रे थरे मुरली दिया तू भाई तो मधु मुरली सोना नथुनी मन मोहना तो मधु मुरली सोना नथुनी मन मोहना आउ गोठ जीवा मन नाही रे थरे मुरली दिया तू भाई आउ गोठ जीवा मन नाही रे थरे मुरली दिया तू भाई थरे बंसी बजा कन्हाई रे थरे मुरली दिया तू भाई थरे बंसी बजा कन्हाई थरे चयन पूज्य वरम गुणहीनाम शेषगुणाधिपतिं भावभीरुजनि सत ताम्बरदं प्रणमामि गुरु शिव प्रणमामि गुरु शिव जय गुरु पद बंदे पद बंदे पद बंदे गुरुदेव पद बंदे पद बंदे पद बंदे गुरुदेव त्रायितव जय हे पद बंदे गुरुदेव त्रायितव जय हे पद बंदे गुरुदेव पुष्पांजलि करे धरि पुष्पांजलि करे धरि मागे बरा भय हे मागे बरा भय हे पद बंदे गुरुदेव त्रायितव जय हे पद बंदे पद बंदे पद बंदे गुरुदेव त्रायितव जय हे पद बंदे गुरुदेव सुरंग बेनी पायर बंदे विश्व चराचर सुरंग बेनी पायर बंदे विश्व चराचर अपरिमित महिमा अपरिमित
जे पदोदय हे जे पदोदय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव रक्तिम छोटा श्रीमुख अखंड सुधमयूख रक्तिम छोटा श्रीमुख अखंड सुधमयूख तेजो दीप्त पघन तेजो दीप्त पघन दियई अभय हे दियई अभय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव संसारक सबु काले तुमे खींची बख्लवाले संसारक सबु काले तुमे खींची चक्रवाले संसारक सबु काले तुमे खींची चक्रवाले पद परिचर्यासे पद परिचर्यासे पद परिचर्यासे मति कर थय हे मति कर थय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव पुष्पांजलि धरि करे पुष्पांजलि करे धरि पुष्पांजलि करे धरि मागे बरा भय हे मागे बरा भय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव गाई तव जय हे पद वंदे गुरुदेव जय गुरु Nigama-upadesa, page 226. Knowledge of scriptures and knowledge of the self. You probably know the episode of Narada Sanatan Kumar. Chandogya Upanishad. Narada, after reading the Rig Veda, the Yajurveda, the Sham Veda, and fourth Veda, the Atha Veda, history, mythologies, the fifth Veda,
grammar, the Shraddha Tattva, death rituals, mathematics, metaphysics, logic, ethics, Brahma Tattva, ghost science, archery, astronomy, serpent scriptures, and the history of creation, asked Sanat Kumar. Bhagavo mantra videvasmin atmavit. O Master, acquiring all knowledge, I am still ignorant. Hence, Narada, amid inner delusion, asked Sanat Kumar about knowledge of the self. You think that one becomes Atmavid, the knower of Atma, as soon as one becomes Shastravid, the knowledge of scriptures. Take the example of Narada. Even after becoming versatile scholar in the scriptural knowledge, he could not get rid of inner predicament and delusionment. Therefore, acquisition of the scriptural knowledge is not enough. I consider a single valuable experience more precious than acquisition of bookish knowledge of all scriptures. There are no dearth of knowers of the scriptures. You become a knower of self and a saint. I do not want to interfere anybody's freedom. Those who do not agree to my ideology should not stay in my monasteries and hermitages and adulterate my ideology. If they do anything contrary to my views, I shall understand that they are not really free, but they are entirely governed by their self-will. You become independent, but if I find that you have deviated from the real objective due to your self-will, I shall be thoroughly sad and disappointed. All are not fortunate to attain truth as soon as they desire to gain it. One in thousands may attain perfection, but all others obey his instruction and develop by building the self. If you become established in truth or attain truth, may I put any obstacle? Do you know why I put an obstacle? When I notice that you are deceived and lose your way in delusion of Maya, I put the hindrance for which you are displeased with me. You think that I suppress your individuality. When your eyes are opened by the grace of God, you will realize that the path I have shown you is the right path of truth. But the path you have chosen was dragging you to the whirlpool of falsehood. I have united, say, 5 of you together to form a Sangha and thereby develop collectively. I have no selfish interest in it. You develop and become truthful. If you term this desire selfless, I am indeed selfless. Moreover, this selflessness is my glory, because by such selflessness, true humanity will unfold in you. Jai Guru. Jai Guru. Universal Saraswata Sangha Puri, America, Saraswata Sangha, UK and North Carolina, 879 to Sangha Puja System Report. And date September 10th, 2023, Sunday, time 7:15 a.m. to 8:45 a.m. Eastern Standard Time, first session, and then 9:45 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Standard Time, second session. Arya Sanvi, Ashwini Bhai, and Vishwajit Bhai. Adivasi Puja was held on September 9th, 2023 at Ashwin Mandir at 7 p.m. Eastern Time. Sangha Puja was held on September 10th, 2023
First session time 7:15 a.m. to 8:45 a.m. Eastern Standard Time. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratiksha songs, Hridaya Nakunja Rasa, Bedipay, and Sava Mandira Dware Asichu Deva by Nihar Rai and Programa respectively. During that time, all other devotees joined the puja either at answers or via teleconference. At 7:30 a.m., Biswajit Bhai offered Arati to Sri Thakur. After Arati, Vrindavan Bhai sang Bandana and Stota Bandana along with other Bhais and Maharaj. In addition, Braja Bhai led the reading of Parichaya Patra, Samlani Prarthana, and Asana Mandarani Puja Prarthana. Then Devi Bhai read Sri Thakur, Gita verse 47. After that, Sandip Bhai read Sangha Seva for 53rd year, third part, Bandana, Prarthana, and Prarthana Karinka Prat. Following that, Asani Bhai invited Sri Thakur for the Balya Bhoga, second session puja, and all Bhais, Maharaj, and Young students for Balya Prasad, and to attend the second Sangha Puja session. The first session puja was concluded with Jai Guru Mahamantra Kirtan. After the first session, Bhoga was offered to Sri Thakur, then Bhais, Maharaj, and younger friends had Balya Prasad, and asana was closed. Second session time 9:45 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Standard Time. The second session of the puja started at 9:30 a.m. with Abahana song Asohe Santo Kanto Madhura. Bisho Sara Boli Debe Dakibi Boli Mu Bhabe Magibi Nahi Mu Ichi To Toranore Oil Kori by Suvendu Bhai and Linama. The curtain of the Natamandar was opened after the singing of Bhava Bandana Mantra by all devotees. Shivani Ma sang Bandana, Itte Sundariya. After that, Bina Bhai read Nigam Upadesa page 226, eligibility for service. Then Sangita Ma read minutes of the last Sangha Puja held on September 3rd, 2023. After that, Amitabh Bhai read Nilachal Thakur Nigamananda, Anubadan Korapade, More Pade. Then Biswa Bhai narrated the summary. After that, Rasmi Ma sang Prarthana Sangita, Aji Baruchi Morave Antara. Kishore Bhai read Sansarapati Part 1, Chapter 33, Duties of Renunciation for Householders. This was followed by a question and answer session conducted by Rajendra Bhai. Young aspirant session started with the Prarthana Sangita sang by Anik. Bhakti Ma conducted a young aspirant session and discussed about Janmashtami, the divine birth of Lord Krishna. Kaliya Sanvi, Aswini Bhai, and Biswajit Bera Bhai performed Bhava Vinimay, followed by Nimantran to Thakur for Madhyan Bhoga. I invited all Maharaj Bhai young aspirants for Madhyana Prasad. Saraswata and Chatra Bhai invited Sri Thakur, all Bhais Maharaj young aspirants to next Sangha Puja, be held on September 17, 2023. Then Biswajit Bhai begged for forgiveness to Sri Thakur and all Bhais Maharaj and young aspirants. And the second session of the Sangha Puja was concluded by Vidya Prarthana led by Anjali Ma, followed by Jai Guru Nama Kirtan, and then Asan curtain was closed. Then Madhyan Bhoga was offered to Sri Thakur in his room. Biswajit Bhai took attendance. All Bhais Maharaj and young aspirants present at answers had Madhyan Prasad and left for the day. Link to the attendance sheet available at www.jaguru.net member/Sangha Puja.
श्री श्री ठाकुर चरण स्थित अन्वी अतनु भाई एंड विश्वजीत बेहरा। जय गुरु। जय गुरु। नीलाचल ठाकुर निगमानंद मोर पदे। श्री श्री ठाकुर महाराज का अपार करुणा बल नीलाचल सारस्वत संघ पक्षर लीलु लिखित श्री श्री ठाकुर अनवेद्य लीला कहानी नीलाचल ठाकुर निगमानंद पुस्तकर उत्कलानुवाद प्रकाश पाउथिबा खबर पाई मु व्यक्तिगत भाव में आनंद अभिभूत हो पड़ी। एही ओडिया संस्करण प्रकाश पाई मुखबंध स्वरूप किछि लेखिबाई नीलाचल सारस्वत संघर सभापति और परिचालक श्री चैतन्य शरण दास भाई मते अनुरोध जणाइछन्ति। मुझे कौन लिखि जानी पार नहीं। श्री श्री ठाकुरंकर एही लीला प्रसंग सहित मु और लेखिका नारायणी अति निबिड़ भाव में संपृक्त, किंतु जीए मरण सहित संग्राम करू करू चक्षु जल निजर बक्ष सिक्त करी श्री श्री ठाकुरंक नीलाचल धामर एही लीला कहानी लिखिथिला से आज सत्य केउठी? से तो आज आम भितर नाही। से आम भितर आज सशरीर रे विद्यमान थिले ओडिशावासी भक्त भाई और माँ मानक आग्रहतिशर्य ताहार एही पुस्तक ओडिया भाषा रे प्रकाशित हेउछि देखि केते खुशी होई न थांदा। सबु श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा। श्री श्री ठाकुर महाराज बंगला 1331 साल पुरी धाम स्वर्गद्वार निकटवर्ती नीलाचल कुटीर नामक एक कोठाघर क्रय कर सेठारे अवस्थान कले। एथिपूर्व प्रथमे पुरीर चक्रतीर्थ निकटवर्ती कमलकामिनी मंदिर नामक गोटे भड़ा घरे एवं तापरे मोची साई निकटस्थ 3 नंबर गिरिकुटीर प्राय 2 वर्ष श्री श्री ठाकुर रही। 1329 साल बैशाख मास श्री ठाकुर पुरी गमनर प्रारंभ मु सहित सेविका भाव में रही। तेणु श्री श्री ठाकुर नीलाचल अवस्थान समय प्राय समस्त घटनावली सहित मु परिचिता। मोर मानसपटे श्री श्री ठाकुर नीलाचल लीलार बहु टिकिनिकी कथा उज्जवल हो रही। आज बयसाध्यक्ष जो हेतु से सब क्रमशः लिभि लिभि आसला, किंतु सही सबु घटनावली मो जीवन चिर अपसरा अविस्मरणीय सौभाग्य स्मृति। मन पड़े मन पुलकित हो उठुची, देह रोमांचित हो जाउची। एही 2 खंड पुस्तकर लेखिका नारायणी माँ संबंध में मो संक्षेप पाठर किछि उल्लेख करुची। पाठक मानकु लेखिका संबंध तार किछि परिचय प्रदान करिबी। अवश्य नीलाचल सारस्वत संघ महिला संघ पक्षर प्रकाशित नारायणी स्मृति ग्रंथरे नारायणी माँ संपर्क में सम्यक परिचय प्रदान करा जाइछि। बंगला 1332 साल ज्येष्ठ मास त्रिलोचनाष्टमी दिन पुरी रे नारायणीर जन्म। पिता पूर्वबंगर जशोर जिला अधिवासी सुरेश चंद्र चट्टोपाध्याय और माता सविता देवी उभय श्री श्री ठाकुरंकर दीक्षिता शिष्य शिष्या थिले। नारायणीर माँ कन्या संतानटी जन्म करी अल्प दिन पर देरक्षा करियारु पिता नीलाचल कुटीर रे श्री श्री ठाकुरंग चरण रे शिशु कन्या को समर्पण करदे सन्यास होई चलीगले। करुणासागर शिष्य बत्सल श्री श्री ठाकुर शिशुटी को कुटीर रे आश्रय प्रदान करी शिष्य को संसार दायित्व मुक्त कले। तापर ठारू नारायणर लालन पालन दायित्व कुटीरवासिनी माँ माने ग्रहण कले। श्री श्री ठाकुर कन्याटी को निजर अफुरंत स्नेह प्रदान करी निजर करुणार दृष्टि भितर लालन पालन करथिले। कुटीर रे श्री श्री ठाकुरंकर प्राय 12 वर्ष अवस्थान काल रे नारायणीर कुटीर को आसीबा, कुटीर रे तार लालन पालन और शिक्षा प्रभृति बहु स्मृति रे भरा। श्री श्री ठाकुरंकर देहवसान पर्यंत नारायणी दीर्घ 10 वर्ष काल श्री श्री ठाकुरंक सहित ठाकुरंक घनिष्ठ संपर्क रे आसी श्री श्री ठाकुरंक नीलाचल लीला बहु घटना सहित निबिड़ भाव में परिचिता थिला। 1339 साल रे आसामस्थ कोटलामुख मठरे श्री श्री ठाकुर ताकू दीक्षा प्रदान करथिले। तापरे कलिकता तार शिक्षा जीवन आरंभ होइथिला एवं से 1948 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय इतिहास रे एमए पास करी मो सहित कुटीर फेरी आसी सेठारे अवस्थान करिया लागला। एही समय श्री श्री ठाकुरंकर संपर्क में विविध प्रसंग आलोचन आममानकर दिन कटुला। नारायणी तार पालक पिता लीला स्मृति रे विभोर हो रही एवं तांको संपर्क में अधिकरू अधिक जानापी आग्रही हो लेखापढ़ार व्यस्त रोला। एही समय नारायणी कुटीर रे श्री श्री ठाकुरंक शयन मंदिर समस्त सेवार भार निजे ग्रहण करथिला।
खूब भोर उठी राति प्राय 10टा पर्यंत तार एक दैनंदिन कार्यसूची से तैयारी करथिला। प्रतिदिन सही कार्यसूची अनुसार समस्त कार्य संपूर्ण करथिला। सकाळे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ सहकक्षरे समस्त सेवा कार्य शेष करी बाल्य भोगर प्रसाद ग्रहण परे से लेखापड़ारे लगी जाउथिला। एही समय अनेक प्रबंध कविता आदि लिखिथिला। सेथिरु केतोटी लेखा आर्य दर्पण रे प्रकाश पाई पठाइथिला एवं ताहा स्वामी सत्यानंद महाराज और स्वामी सिद्धानंद महाराज का द्वारा परम सादर रे गृहीत हुई आर्य दर्पण रे प्रकाशित होइथिला। एही दुई महाराज श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संबंधरे आउर किछि लेखिया पाई लीलू को अनुरोध जणाउथिले। किंतु सेई श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संबंधरे कोन लेखिबो किछि भाबी ठीक करि पार नथिला। श्री श्री ठाकुरଙ୍କର महासमाधि ग्रहण बेले नारायण को मात्र 10 वर्ष बयस होइथिला। एते कम बयस रे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संबंधरे केते बासी जानि पारथांता। तेबे तार स्मृति शक्ति अत्यंत प्रखर थिला। 3 वर्ष बयस बेलू ता जीवन रे प्राय समस्त घटना तार स्मृति रे उज्जवल होई रहिथिला। उभय सत्यानंद और सिद्धानंद महाराज ठारो प्रेरणा पाई श्री श्री ठाकुरଙ୍କ कृपारे सेई श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संबंधरे किछि लेखिया को लेखनी धरिथिला। मोर जद्योर मने पडुची नारायण माँ प्रथमे नीलाचले ठाकुर नाम देई गोटे कविता श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संपर्क रे लिखिथिला ओ ताहा आर्य दर्पण 1356 साल बैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ मासरे प्रकाश होइथिला। एही कविताटे प्रथम करी से नीलाचल धाम श्री श्री ठाकुरଙ୍କ लीला कहानी संक्षेप लिपिबद्ध करथिला। परवर्ती समय बहु तथ्य संग्रह करी लिखिथिबा नीलाचले ठाकुर निगमानंद पुस्तक एही आद्य कवितार विस्तारित वर्णाढ्य रूपांतर। 1369 साल आर्य दर्पण प्रकाशित तार अविस्मरणीय प्रबंध यही पुस्तक संबंध में प्रथम सूचना प्रदान करथिला। ओडिशा को फेरी आमे नीलाचल कुटीर आसी रहिबा परे ओडिशार बनमाली दास भाई और दुर्गाचरण महांती भाई कुटीर को आसिले नारायण सहित साक्षात करी श्री श्री ठाकुरଙ୍କ संबंध में लेखिया पई तांकू अनुरोध जणाउथिले। सेमानकर ए अनुरोध तार प्राण रे प्रेरणा जागृत करथिला। आर्य दर्पण 1369 साल बैशाख और ज्येष्ठ संख्यार प्रकाशित तार अविस्मरणीय प्रबंध पाठ करी बनमाली दास भाई ता पाखकू जहा चिठी लिखिथिले जणाइथिले नारायण यही पुस्तकर प्रथम खंडरे सन्निवेशित आत्मनिवेदन रे तहिरु कियदंश लिपिबद्ध करिछि। बनमाली दास भाई लीलू को लेखा बंद नकरी आउरी लिखिबारे प्रेरणा जोगाइथिले। एही सब प्रेरणा पाई नारायणी मने मने ठीक कला जे श्री श्री ठाकुरଙ୍କ नीलाचल लीला संपर्क रे विस्तारित भाव रे लिखिबा। एथिपाई तार प्रचुर अध्ययन तथ्य संग्रह और प्रगाढ़ अध्यावसाय चलथिला। दिने से मते कहिला माँ बाबांग संबंध रे तोर जेउ सब घटनावली मने अछि मो आगे वर्णना कर। कुटीर रे सारा दिनर कार्य भितर उपरबेला मु जेतबेले किछि अवसर पाउथली सेतबेले छात उपर बसी मोर ठाकुरଙ୍କ संबंध रे स्मृति ता आगे बखाणी बसुथिले। श्री श्री ठाकुरଙ୍କୁ प्रथमे देखिला दिन ठारू तांको पाखकू आसीबा आसाम मठरे अवस्थान कालीन मोर अविस्मरणीय स्मृति पुरी धाम और नीलाचल कुटीरवास संबंध में टिकिनिखि कथा और परिशेष श्री श्री ठाकुरଙ୍କ स्थूल जगत विदाय नेबा पर्यंत जहा किछि मोर मानस पटरे अभूला होई रहिथिला क्रमशः ताहा ता आगे वर्णना कली। उपर बेला से मो ठारू जहा शुणुथिला राति रे किंबा परदिन सकाळे से सबु से तार जादूकरी लेखनी रे रूप देउथिला। मध्याह्न प्रसाद सेवन परे ताहार सेई सब लेखा से मते पढ़ी सुनाउथिला। लेखा संपर्क रे मोर मंतव्य आलोचना सुनी लेखार परिवर्धन परिमार्जन और संशोधन प्रवृत्ति करिनेउथिला। भाषा भाव प्रकाश भंगीर वर्ण विभव तार सेई सब लेखार एपरी मर्मस्पर्शी और रससिक्त थिला जे मु से सब सुनी आत्महरा होई जाउथिले। किंतु एही कार्य चलिथिला बेले मु जानि नथिली जे नारायणी सांघातिक भावरे जे रोगाक्रांत होई पड़लानी। ताकू बेले बेले ज्वर होथिला और मझिरे मझिरे काश। या भितर जे से राज रोग बा जख्मार शिकार होईछि ताहा आमे दुहे केही जानि पारि नथिलु। ज्वर छाड़ू नाही देखी पुरीर श्री श्री ठाकुरଙ୍କ अनुरागी तत्कालीन डाक्तर दीनबंधु महापात्रଙ୍କୁ डाकी ताकू देखाइली। से परीक्षा करी मते कहिले जे लीलू माँ जख्मा रोगरे आक्रांत। क्रमे रोगर प्रकोप बृद्धि पाइला। काशरे रक्त पड़ला और मझिरे मझिरे रक्त बांति मध्य होला। मु चिंतित होई पड़ली। किंतु
ସେ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ତାର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁବାର ତାକୁ କହିଛି, ଲିଲୁ, ତୋର ଏଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଏତେ ମଥା କଟାଇ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଲେଖାଲେଖି କରିବୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ବାଧା ଦେବି? କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ସେ ରଖିନଥିଲା। କରୁଣା ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରନା। ମୋ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଯେପରି ଠେଲିପେଲି ଏସବୁ କରାଉଛି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ନ ଲେଖି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେବ। ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯଦି ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ନ ଲେଖି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଲେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ମରି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ। ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ। ତାର ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ ବାଧା ଦେଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ତାର ଲେଖାଲେଖି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳାଚଳ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଲେଖି ଶେଷ କଲା, ସେଦିନ ତାର ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ କହିଲା, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଶେଷ ହେଲା ମା। ତାପରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ନୀଳାଚଳେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ନାମରେ ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପରେ ତାହା ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ 2 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳା 1369 ସାଲ ବୈଶାଖ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 1370 ସାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଶିରୋନାମାରେ ଏବଂ 1370 ସାଲ ବୈଶାଖଠାରୁ 1376 ସାଲ ଶ୍ରାବଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳାଚଲେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ନାମରେ ତାର ଏହି ଲୀଳା କାହାଣୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1329 ସାଲ ଠାରୁ 1342 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ 14 ବର୍ଷର ଲୀଳା କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣୀ ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୀଳା କାହାଣୀ ଲେଖାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନୁମା ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଜୀବନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତାହା ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାବା, ଥିଲି ଯେବେ ମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଛପଳ ଦର ଫୁଟା ଥିଲା ଭାସ, ନଗ୍ନ ଶିଶୁ ମୁହିଁ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲି ତୁମ ନିଜ ଆସପାସ। ଗଡ଼ୁଥିଲି କେତେ ବାଲୁକା କୁଟୀର ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧରେ ବସି, ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁ ପୁଲକିତ କର ସ୍ନେହେ ସୋହକେ ହସି। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ଚପଳତା ମୋର ସେ ଖେଳା କୁଟୀରୁ ଥରେ, କୁଟା ଖିଅ ଆଣି ନିଅ ବାବା ବୋଲି ଦେଇଥିଲି ତୁମ କରେ। ଅବଧ ଶିଶୁ ମୁଁ ଛାର କୁଟା କିଅ ବା ମୂଲ୍ୟ ତାର, ନେଲ ହାତୀ ସହସ ବଦନେ ଗଣ୍ଡୁ ମୋର ପୋଛି ଝାଳ। କୋଳେ ଧରି ଯେତେ କରିଲ ଆଦର, ଲିଭିନି ତା ମନ ପଟୁ, ଲିଭିବ କି କେବେ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଯେବେ ଅବା ଯାହା ଘଟୁ। ହୋଇପାର ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦେବତା ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର ମୋର, କିଏ ଅଛି ଆଜି ତୁମ ପରି ମୋର ଆପଣାର ଏହି ଭୂମେ। ବଡ଼ ହେଲ ବୋଲି ଦେବକୀହେ ଠେଲି ଚରଣ କମଳୁ ଦୂରେ, ସ୍ନେହ ସାଗରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଜଳ ସାହା ମୋର ଏଇ ପୁରେ। ଅସୀମ ମହିମା ଗୁଣରାଶି ଯେତେ ତଳକୂଳ ତାର ନାହିଁ, ଅକ୍ଷମ ଯେ ମୁହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନେ ତାହାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଶକ୍ୟ କିଏ ହେବ ସାଗର ବେଳରେ ଗଣିବାକୁ ବାଲି କଣା, ତହୁଁ ବଳି ତୁମ ସ୍ନେହ ମମତା ଜ୍ଞାନୀଏ ହୋଇବେ ବଣା। ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଲେଖାଟି ତୁମର ଚରଣେ ଆଜି, ଗୁନ୍ଥୁଅଛି ଯାହା ଘେନା ହଉ ପାରେ ହେ ବିଶ୍ୱ ରାଜାଧିରାଜ ତୁମର ମନୁ। ସାରସ୍ୱତ ମଠ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୀଳାଚଲେ ସାରସ୍ୱତ ମଠ ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୀଳାଚଲେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକଟି 2 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ପାଠକ ତାହା ପାଠ କରି ପ୍ରଭୂତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକେ ପତ୍ର ଦେଇ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଚିଠି ପାଇ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁସ୍ତକଟିର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ମା, ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ପାଇଯାଇଛି। ଏହି 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ତାହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପାରିଶ୍ରମିକ।
ଆଜି ନାରାୟଣର ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ସମାଦୃତ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି ନୀଳାଚଲେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ହେଉନଥାନ୍ତା। ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସମାଦୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ସମାଜ ପୁସ୍ତକଟି ପାଠ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଘଟିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାରସ ମାଧୁରୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ମୋର ଏହି କାମନା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତା ସୁରବାଳା ଦେବୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସନ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 18/2/1992 ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଜୟଗୁରୁ। Jayaguru. Mora Pade, presented by Ma Surawala Devi, about Nilachale Thakura Nigamananda, written by Narayanima. Ma Surawala Devi felt extremely grateful to have the opportunity to write a preface for the translation of Sri Thakura's life in Nilachala Dhamapuri. And she wished the writer, Ma Narayani Devi, was around us in her physical self to observe this day. In the Saal 1331, Sri Thakura lived. You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. In Puri. Before that, he lived in Kamalakamini Temple and Giri Kutira for around 2 years. Ma Surawala Devi was in the seva of Sri Thakura from the very beginning of his time in Nilachala Dhama. He was very acquainted with all the Leela, and he felt the excitement in recollecting those memories. The writer of these 2 books, Nilachale Thakura Nigamananda 1 and 2, the writer is Ma Narayani Devi. Ma Surawala Devi is giving a little bit of introduction or about her life. Ma Narayani Devi was born in Bengali Saal 1332 to Father Suresh Chandra Chattopadhyay and Mother Savita Devi, who were disciples of Sri Thakura. After her mother passed away within days of her birth, her father took sannyas, leaving the little baby in the care of Sri Thakura. Ma Narayani Devi grew up in Nilachala Kutira with the direct care and supervision of Sri Thakura. After getting Diksha from Sri Thakura in 1339 Saal, she then continued her studies. She finished her MA in History from Kolkata University in the year 1948, and then she came back to Nilachala Kutira. During that time, while she was spending most of her day in seva of Sri Thakura, she wrote a couple of poems and essays and sent them to publish in Aryadarpa. Her writing was greatly admired by Swami Satyananda Maharaj and Swami Siddhananda Maharaj. They both encouraged her to continue writing more about Sri Thakura's Leela in Puri. Her first poem on this was Nilachale Thakura, and that was published in Aryadarpan in 1356. After that, she collected more details on various Leelas of Sri Thakura and published the book Nilachale Thakura Nigamananda, which was a comprehensive illustration of the earlier poems. After her article Avismaraniya was published in Aryadarpan in Saal 1369, Vanamali Das Bhai and Durgacharana Mahanti Bhai encouraged her to continue writing about Sri Thakura's Nilachala Leela. Inspired by all the encouragements and with a drive from within, she started collecting more stories about those days of Sri Thakura. She started with Ma Surawala Devi, who was very close to Sri Thakura. She spent most of her afternoon collecting the facts and anecdotes and then transforming those stories on paper with her eloquent writing. While she devotedly continued to write,
on Srishti Thakura's Leela. She fell ill to tuberculosis. Even with all her struggles to that very difficult disease, she continued her writing. She felt a strong desire to complete her writing, as if she had a spirit guiding her through her work and inspiring her to continue and complete. She was very happy, very content when it was finally completed. It was then published in Aryadarpan titled Nilachale Thakura Nigamananda. From Sal 1369 to 1370, titled as Avismaraniya, and from Sal 1370 to 1376, titled as Nilachale Thakura Nigamananda in Aryadarpan, captured the beautiful illustration of Srishti Thakura's Leela in Puri between the Sal 1329 and 1342. Later, this was published as a two-part book series by the direction of Saraswata Sangha. As letters of acknowledgement and accolades poured in for her writing, Narayanima felt her hard work has paid off immensely. All the bhaktas are able to reminisce in the Leela of Srishti Thakura. Now, with the translation of those two books into Odia, thousands of bhaktas would get the same opportunity to indulge themselves with the glorious tale of Srishti Thakura, so elegantly brought to life by Ma Narayani Devi. Prabhu Namilana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi Prabhu Namilana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi Pada tale taba sharana magochi Pada tale taba sharana magochi Sevaka padare bhavagrahi Prabhu Namilana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi Prabhu Namilana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi Tini bhuvana ranatha tume para Tini bhuvana ranatha tume para Anatha ranatha nama bahi Anatha ranatha nama bahi Tini bhuvana ranatha tume para Anatha ranatha nama bahi Iha parakaya jagi rahi bhao Iha parakaya jagi rahi bhao Santana vatara tume sai Santana vatara tume sai Loda nahi mora loda nahi Prabhu Nandana Bana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi Prabhu Nandana Bana Indra Bhubana Loda nahi mora loda nahi E sara samsare tuma pari mora E sara samsare tuma pari mora Apanar hoite
हरि मोर आपणार होई केही नाही आपणार होई केही नाही सुखर दुःखर चिर सहचर सुखर दुःखर चिर सहचर तुमा समाची ते गोसाई तुमा समाची ते गोसाई लोडा नाही मोर लोडा नाही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही पदतळे ताबा शरण मागोची पदतळे ताबा शरण मागोची सेवक पदारे भावाग्राही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही भासी जाऊथिले भव सागरे कूଳରେ लगा तुमी भासी जाऊथिले भव सागरे कूଳରେ लगा तुमी बाट खुड़ी केबे बाटरे गले बाट खुड़ी केबे बाटरे गले बाट जे देखाओ तुमे रही बाट जे देखाओ तुमे रही लोडा नाही मोर लोडा नाही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही तुमे परा प्रभु कृपा पारमार तुमे परा प्रभु कृपा पारमार बाट खुड़ी जाई सदा मुझी बाट खुड़ी जाई सदा मुझी तुमे परा प्रभु कृपा पारमार बाट खुड़ी जाई सदा मुझी देह मन धन जहात देश देह मन धन जहात देश त्रिपदे संपोषी प्राण त्राई त्रिपदे संपोषी प्राण त्राई लोडा नाही मोर लोडा नाही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही पदतळे ताबा शरण मागोची पदतळे ताबा शरण मागोची सेवक पदारे भावग्राही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही प्रभु नंदन वन इंद्र भुवन लोडा नाही मोर लोडा नाही जय गुरु Jai Guru. Samsara Pache, Chapter 34, The Method of 4 Stages of Human Life. A Dvija, one who is born twice, a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya, after being initiated with Savitri Mantra, will receive the sacred thread while wearing a Maunji Mikala, a girdle made of munja grass, in Guru's cottage in the forest. During his stay, he will practice tolerating opposite conditions, study the Vedas and other religious scriptures, as
appropriate for his caste, and learn how to control his mind. And acquiring knowledge through proper education and restraint, he will return home and enter into household life by marrying a woman as per principles laid down in scriptures. Then he will perform activities befitting an ideal household life and have children to carry on the sacred legacy of the family. The next step for the individual is to enter into one ashram, transitory stage of transferring household duties to society. While living in solitude in a Vanaprastha ashram, when one experiences manifestation of jnana, true knowledge, due to deep vairagya, dispassion accrued from tattva vichara, deliberation of truth, he ought to embrace sannyasa ashram, life of renunciation. But those who develop vairagya, dispassion for the material world during the brahmacharya ashram need not enter any other ashram. Even there is no need for them to take sannyasa. Sannyasa ashram, life of renunciation, is for those who, on entering grihastha ashram, life of a householder, become attached to materialistic life. However, it has to be done at an appropriate time. He who embraces sannyasa by deserting old parents, a devoted wife, and small children is a vicious sinner. On emergence of vairagya, dispassion, the mind is absorbed into God, the ultimate unchanging reality, Sachidananda, and the chitta, memory, becomes serene, peaceful, and steady. Because in this state, all vittis, propensities of the chitta become non-functional. He whose mind is bound by ashtapasa, eightfold ties, which are hatred, shyness, fear, hesitation, aversion, pride of being born to a higher class, morality, and ego, is a beast. He who is free from these eightfold ties is a Sadashiv. Thus, Tattva Jnana, ultimate truth, manifests as soon as one attends the self of Shiva. Then the ego and intellect gets destroyed and the attachment to the material world disappears. At that time, a grihastha, householder, should embrace sannyasa ashram, abode of the renunciation, to dwell in his own self. That is the intention of the writers of the scriptures, the sages. But until the manifestation of jnana, true knowledge, one should not accept sanya ashram by forsaking karma, action. Jai Guru. Jai Guru. काले आमे भक्ति लाभ तृतीय उपाय नाम संकीर्तन कार्य डिस्कसन पढ़ाला ये ठाकुर प्रेमी गुरु भक्ति लाभ उपाय प्रथम उपाय है चित्त शुद्धि, द्वितीय उपाय है साधु संग और तृतीय उपाय नाम संकीर्तन। ये तीन कंटिन्यू आउला पूर्वटा आमर साधु संग पूर्वटा चित्त शुद्धि आज नाम पढ़ाई सरला ठाकुर तीन उपाय कहते डिस्कसन मैंने पढ़िले ठाकुर को नाम नामी जानते नाम और नामी अभेद अर्थ नाम नवा अर्थ नाम रूप धारण करवा जितक शक्ति समस्त शक्ति नाम भितर निहित ठाकुर कहले तेणुक जेहेतु नाम ही अभेद तेणु जितक शक्ति समस्त नाम भितर अच्छी जब भाव नाम नहीं पारिबा समस्त शक्ति आसी नामी समस्त शक्ति आसी आम साहाय्य कर गोटे कथा कथा साधारणतः लोक मैंने गोटे कथा अच्छे जे एक हरिनाम जत पाप हरे जीवे ना तत पाप करे थे नाम नहीं गले पाप चलीज पूरा जीवर से पाप साध्य ही ना
ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିକି ଆସିକି ଥରେ ନାମ ନେଇଗଲା ତ ସମସ୍ତ ପାପ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି କହିପାରନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ, ଜୀବନ ସାରା ପାପ ଚାଲନ୍ତେ, ମଲା ବୋଲି ଥରେ ନାମ ଚାଲିଗଲା ନା। ଠାକୁର ତାକୁ ଟେବୁଲରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଇଟା। ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ନବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ନବାଟା ନୁହେଁ, ତା ପାତ୍ର ଭେଦରେ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ। କହୁଛନ୍ତି କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କୁ କାଚ ଦେଇକି ମାନେ କଲେ ତା ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ, ମାନେ କାଚ ଫାନୁସ ଦେଇକି ବା କଣ ମାନେ କେମିତି ଲଣ୍ଠନ କାଚ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଚଟା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଇଦେଲେ କି ଆଉ କଣ ଦେଇଦେଲେ ଲାଇଟ୍ ଟା କମିଯିବ। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିବା ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଆମ ଏଲିଜିବିଲିଟି। ଯଦି ପାପି ଯଦି ଥରେ ନାମ ନେଇଯିବ, ଜଣେ ସାଧୁ ଥରେ ନାମ ନେଇଯିବ, ଏକା ଫଳ ପାଇଗଲେ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେତିକି ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି, ଦେହ ରହିଛି, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫଳଟା ହବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମ ନେଇଗଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାପ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଧାରଣଟା କରିବା ହିଁ ଭୁଲ। ରଖୁଛି ଡିସ୍କସନଟା। ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ନାହିଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ନାମ ଉପରେ। ଆମର ଗାଈ ମାଧାଇଙ୍କର କଥା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଯେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ କାଜୀଙ୍କର ନାଁ ହେଲେ, ଜଣେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ହେଲେ ମାଧବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଦି ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜଗାଇ ମାଧବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ତ ମୁଁ ଥରେ ପୂଜାରେ ସଂଘ ପୂଜା ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ମାନେ ମଦ ଖାଇକିରି ମାତାଲ ହେଇ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରୁଥିଲେ, ଗଛ ମଦ ଖାଇ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ପଦ ମନେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଦରେ ନିଶା ମାତା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର ପରେ, ମଦରେ ନିଶା ଚାଲିଯାଏ ଭାଇ, ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର ପରେ ନାମରେ ନିଶା ପାଗଲ করে ধরে একেবারে যায়। ମଦ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ନିଶାଟା ହୁଏ, ଅତି ମଦ ଖାଇ କରୁଥିଲେ ଗରମ ସମୟରେ, ଯେ ମଦ ଯୋଉ ନିଶାଟା ହୁଏ, ସେ ନିଶାଟା କିଛି ସମୟରେ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାମରେ ନିଶା ପାଗଲ ଧରେ ଏକେବାରେ ଯାଏ। ସେ ନାମର ନିଶା ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରିଲା, ସେ ପାଗଳ କରି ପକେଇବ, ସେ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ସେ ରହିଲା, ଜୀବନ ସାରା ରହିଲା। ତେଣୁ ନାମର ମହାତ୍ମା ଏମିତି। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ପ୍ରେମିକ ଟିକେ ଦଉଛି ସେ ନାମ ପରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଡିସ୍କସନଟା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିନାମ ଭକ୍ତି ଲତିକାର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ତିନିଟା ଉପାୟ, ତ ଯୋଉ ତିନିଟା ଉପାୟ କହିଲେ ଠାକୁର, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ସାଧୁସଙ୍ଗ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ୟାର ମଞ୍ଜି ହେଲା ନା ହରିନାମ। ହରିନାମଟା ଭକ୍ତିକାର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ନିର ଅପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ସରସ ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋତା ହେଲେ ଅତ୍ୟରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର କରିବା କି ନିର ଅପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କରିବା କି ହରିନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନେ ଭୁଲିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତି, ଯାହାର ହୃଦୟ ବହୁ ଅପରାଧ ପ୍ରସ୍ତର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାର ଚିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ବୀଜ ପୋତା ହେଲେ ଅଙ୍କୁର ହୁଏ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀ ଯାହା ହୃଦୟଟା କଠିନ ହେଇଯାଇଛି, ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଳିଆ କଣ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଅପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସୁଖର ମୁଖ ଦେଖିପାର ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେବା ଅପରାଧ ଓ ନାମ ପରିବର୍ଜନ କରି
प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करिवे। हरिनाम संकीर्तन प्रभाव रे सर्वाभीष्ट पूर्ण हुए, समुदाय पुरुषार्थ सिद्ध हुए। प्रेम भक्ति, भगवत सेवा, साधन भक्ति, संसार इत्यादि अनंत फल एकमात्र हरिनाम कीर्तन द्वारा लाभ करा जाए। हरिनाम कीर्तन कले केवल हरिनाम कीर्तन आदि दरकार नहीं, एकमात्र हरिनाम कीर्तन लाभ करा जाए। प्रेम भक्ति, भगवत सेवा, साधन भक्ति, वासना क्षीय। प्रेम भक्ति चरम, भक्ति पथर चरम है प्रेम भक्ति, तापर किसी ना। प्रेम भक्ति पाईगले ही तुम आम जो आम जो कौन नित्य ठाकुर नित्य लोक पुरुष आम नित्य पार्षद केवल प्रेम भक्ति पाइले ही जाई हम, भले जाई हेनी। से समस्त नामर महिमा, समस्त कंठे नामर गौरव गीति मिले। क्रमागत नाम आपना चाहे प्रेम भक्तिर संचार हेब। अतएव भाव अनुजाई बंधु बांधव सहित प्रत्यय संकीर्तन करने भक्ति लाभर सर्वप्रधान उपाय। नाम करू करू आनंद सागर उछुली उठिब, शांति मिल, विषय बासना तिरोहित हो सुधा भक्तिर संचार हेब। कथा जे लिखिले प्रेमिक गुरु माने आमर कौन माने कठिन हो जाए अपराध करी आम नामर फलटा से ना, तथापि सजेस्ट कर नाम नवा उचित। नाम नेले धीरे धीरे प्रयोजन आसो कि अपराध कहते अपराध बेसिकली क्विक समय से कहते दीटा देखते जदि आम तीन अपराध कहमर कौन आमर संघ नीति अच्छी तीन अपराध रही सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध। ठाकुर वैष्णव अपराध उल्लेख करना गुरु बोधे मोर मन हुए कि बोधे वैष्णव अपराधटा वैष्णव शास्त्र ही आसी ना, किंतु मूल भक्त शास्त्र बोधे गुड़े कथा अच्छी अपराध नाम अपराध। ठाकुर कहते सेवा अपराध नाम अपराध वर्जन कर चलिया पड़ो। ठीक अच्छे समय रखा जय। Divyam, if you are there, please start the song. Join. नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर गुरु सेवा पाई मने आशा बही पयाछु आमे गुंथाहार आमे तो सबिये नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर आमे एक पितार संतान एक आम चिंता एक मन आमे तो सकले भाई भौनी आमे एक निगम संसार आमे तो सभी नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर आमे एक मंत्रे दीक्षित गुरु सेवा एक व्रत गोटिए पत्थर जात्रि मेरे गोटिए अमर लक्ष्य स्थल आमे तो सभी नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर एति बड़ सना सकले
योगा संताना गुरु कृपा बळे आमे बलियान गुरु नाम सहचर आमे तो सभिये नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर प्राणरणी वीर आकर्षणे कांति होई अच्युतन पाणे एतनुमानार प्रतीकनि करे मिलन आनंद तले स्वर हमें तो सभिये नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर श्री गुरु श्री पदे लुहारी ए शुभ लगने करुआली तुम सेवा पाई आम संघ प्रीति भंगुर संसारे हेउचिर आमे तो सभिये नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर गुरु सेवा पाई मने आशा बही होइयाछु आमे गुंथाहार आमे तो सभिये नाना जाति फूल बहु रंग बहु महाकर बहु रंग बहु महाकर बहु रंग बहु महाकर Jai Guru Young Aspirants. We'll start with attendance, and then we'll ask Vivian to explain the meaning of the song he just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa? Jai Guru. Jai Guru. Aisni? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aaron? Jai Guru. Aaron person. RSP person. Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Ashrita? Jai Guru. Jai Guru. Jammu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Eva? My Jai Guru. Se chaligalani na se basi paribani. Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha? Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanji? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru.
Sarthak, Jai Guru. Jai Guru. Bobby, Shilpi, Shreya, Jai Guru. Manu, Jai Guru. Jai Guru. Jimmy, Jai Guru. Jai Guru. Simran, Take care, ma. Jai Guru. Shrija, Take care, ma. Jai Guru. Suhani, Yukta, Take care, ma. Jai Guru. Is there anyone I missed? Jai Guru. Timmy is here. Jai Guru. Jai Guru. Okay. Divyam, can you explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru. The meaning of the song is, we are a variety of flowers, each with its own unique scent and color. However, when it comes to Guru Seva, we unite to form a grand flower garland. We share a common lineage, as if we were brothers and sisters, stemming from the same father. Our thoughts and minds are aligned, and we are part of the Nigama family. We collectively recite a single mantra, with our primary goal being Guru Seva. We walk the same spiritual path and share a common destination. In this community, there exists no distinction of rank or knowledge. Our strength is derived from the blessings of our Guru, and our Guru's name is always present in our lives. Our unity is rooted in a profound attraction to Thakura. During this sacred moment, we express our devotion by shedding tears at the feet of Thakura. May our love and affection for your seva endure. Jai Guru. Jai Guru. It's a beautiful song, and it reminds us. It is about devotion, but it also reminds us of the power of our Sangha, why we're all here together, those feelings that are talked about in that song about how we're all here for one goal, which is to worship Thakura. We work together to serve him. We work together to learn more about him. And all of those feelings that we get when we meet here together, and especially strong feelings we get when we can meet all in person in whatever various forms that Samani or Bhatta Chakras, things like that. This song really encapsulates beautiful feeling that we get when we do that, and reminds us who we are, why we're here specifically together. Thank you for the explanation. So today, hopefully you all have the reading out or are getting the reading out. Today we're going to be discussing Advaita Vedanta, which is what we're going to read is going to be familiar to you because this is the philosophy we follow. If you remember the last few months on this session, we've been talking about Chaitanya Mahaprabhu, Aurangzeb, and we've been talking about Shankaracharya or Adi Shankara. And we learned who both of them are. The last time we picked up on this with Adi Shankara, we talked about the four Dhams and the Mahavakyas associated with them. And so today we're going to be talking about the philosophy of Advaita Vedanta that was codified, kind of organized, and then widely spread by Shankaracharya. And the reason we're doing that is Thakura has specifically said, when this all started, we read a passage in the Upanishads many months ago at this point,
where Thakura specifically said we follow the path of knowledge along with a path of faith, and that path of knowledge, the seed of knowledge, jnana, is represented by, in that reading he talks about, represented by Shankaracharya. So in this reading, this is more of a kind of encyclopedic discourse definition of what Advaita Vedanta is. So it gives us general definition, history of this philosophy, but these concepts, when it talks about what it is, what's done, are not going to feel that new to you. Most of it should be familiar, because in the years that we've been doing this session and what you read yourselves from Upadesh or other texts and other things that Thakura has said, this is what he's been teaching us. And in reading it this way, we're just seeing all of these concepts that we've already learned about, heard about from Thakura all together. And also, we're reading this as we read the Gita. A lot of this philosophy can be seen there, it's derived from there. And so as we're reviewing it and we're seeing these concepts, it might be easier to think of them all together, see where it comes out as we're reading and interpreting the Gita. So with that, as we do this reading, think about what's familiar, think about if you have any questions. There are a lot of terms that are thrown out here, most of which you've probably seen before. But keep that in mind, and then we'll discuss. So Ansh is going to read for us. So Ansh, when you're ready. Guru, what is Advaita Vedanta? The first person to consolidate the principles of Advaita was Adi Shankara. Continuing the line of thought of some of the Upanishadic teachers, Shankara expounded the doctrine of Advaita, a non-dualistic reality. According to Advaitins, Shankara exposed the relative nature of the world and established the supreme truth of the Advaita by analyzing the three states of experience, being awake, dreaming, and being in deep sleep. The supreme truth of the Advaita is said to be the non-dual reality of Brahman, in which Atman, the individual soul, and Brahman, the ultimate reality, are identified absolutely. The three states of consciousness are subsumed into a fourth transcendental state, known in the Upanishads as Turiya. In Advaitic philosophy, the manifold nature of the phenomenal world and their ultimate unity is symbolized by Om, considered to be the most sacred of Hindu mantras. It must be noted that many of these ideas have been explained in detail in the Upanishads dating back to 1000 BCE. Adi Shankara systemized his conceptions of dualism and its practice into coherent works such as the Viveka Chudamani, Questionable Discrimination. He is also well known for propounding a system of bhakti, selfless devotion, within an Advaitic system of philosophy, and composing several bhajans, devotional songs, which he believed brought one closer to realization. Adi Shankara's treatises on the Upanishads, the Bhagavad Gita, and the Vedanta Sutras are quoted as evidence that he advocated reasonable dogma. His most important lesson was that reason and abstract philosophizing alone would not lead to moksha. He believed that it was only through selflessness and love, governed by viveka, Sanskrit for discrimination, that a devotee would realize his inner self. He proposed that while the phenomenal universe, where consciousness and bodily being are certainly experienced, they are not true reality. He did not mean to negate it, but considered that the ultimate truth was Brahman, the one divine ground that is beyond time, space, and causation. Brahman is immanent and transcendent. Brahman is the material cause for the cosmos. Brahman itself transcends all binary opposites/dualities, especially aspects as form and being, since it is incomprehensible by the human mind. We must pierce through a hazy perspective to understand our true being and nature that is not changed and mortality, but unmitigated bliss for eternity. If we are to understand the true motive force behind our actions and thoughts, we must become aware of the fundamental unit of being. How, he asks, can a limited mind comprehend the limitless self? It cannot, he argues, and therefore we must transcend even the mind
and become one with soul consciousness. Subsequent Vedantins debated whether the reality of Brahman was sagana, with attributes, or nirgana, without attributes. Belief in the concept of sagana Brahman gave rise to a proliferation of devotional attitudes and more widespread worship of Vishnu and Shiva. However, one must remember that Advaita Vedanta did not deny saguna Brahman. Indeed, Shankara counseled worship of God in its very real forms, and has composed numerous works deploring the uselessness of intellect and calls for the true intuition of the heart to be found in the love of the Lord. Saguna Brahman and Nirguna Brahman are both valid forms. Perhaps Advaita is best explained by the great 19th century Advaitist, Sri Ramakrishna. He compared that the infinite formless Nirguna Brahman to a vast ocean, that, with the cooling breeze of devotees' love, frozen into ice in some places, developed its form. This was equally real, though with the warmth of the knowledge of the sun, the ice would eventually melt, and the devotee would realize himself as one with ultimate undifferentiated being. Jai Guru. Before we go into discussion, does anyone have any questions? Jai Guru, this is Pratyush. What does it mean when it says a non-dualistic reality? Okay. Okay. So the word Advaita in Sanskrit can be put into two parts: meaning not, and Dvaita meaning two. So that's why it says non-dualism, and it's basically the concept that dualism is the concept of you have two entities. So in this case, when it's talking about God and you are two separate things, that's dualism. Non-dualism is that we are not seeing ourselves as separate. So we've talked about this concept before, Ramanatha, and we'll talk about it again as we go through this, but we're not seeing God as separate in this non-dualistic perspective. Does that answer your question? I agree, yes. Okay. Are there any other questions? I had a question. In the first paragraph, it says that Atman and Brahman are identified absolutely. What do they mean by that? So, okay. So it just means that it's absolutely, in this case, it's basically saying that's the ultimate truth. So we talk about Brahman as the ultimate reality. So in this philosophy that we follow, those are the two things that we focus on, Atman and Brahman, as the most real things and the core of that philosophy. Does that answer your question? I think that makes sense. Okay. Any other questions? Okay. Then we'll go part by part here. And again, a lot of these concepts you've seen. So on this first paragraph, Shankaracharya, it describes how, what process, what Shankaracharya kind of studied to come to these conclusions, and what did he look at, and what did he analyze to get to this conclusion or this philosophy of what the supreme truth is? Manu, what did Shankaracharya look at, or what did he analyze to get to this concept of Brahmanatma and Advaita?
To analyze the conceptions of non-dualism further. So that's the conclusion he came to with that, which did exist at that time. But it says in the first paragraph, he analyzed something. He did some kind of practice to get to that point. And second, he analyzed the three states of experience. Bingo. Yeah, Jacob. Very good, right. So he looked at states of experience, or we can think of it as states of consciousness, of being awake, being asleep but dreaming, and then being in a deep sleep. And that's something I want to point out, that kind of practice and that analysis is something that people do that in various ways, and there are very spiritual practices related to that we might encounter as you're learning about things that Sakura mentioned, or other things about how we follow philosophy. But then in analyzing those, then there's a concept of course, transcendental state, that's above those states of consciousness, and that's kind of the state that we associated with liberation, and when you have that true understanding, which we talk about in other places. Okay. So we've touched on this a little bit already, but what does Advaita Vedanta say about the relationship between Atma and Brahma? Aditi, what is the relationship, according to our philosophy, according to Advaita, between Atma and Brahma? Sorry, Guru, I'm not sure. Okay. Do you know what, like, when we define Atma, like, can you define what Atma and Brahman are and how we think about it? Guru, Atma is defined as the individual soul, and Brahma is the soul for everyone. Guru? Right. So Atma is what we think about as our truest self. We can translate it loosely as our soul. That's within each and every one of us. That is the truest sense of who we are. And Brahman is what we think of as the universal soul. Like it's everything. So does anyone have an idea what is the relationship it talks about here between Atma, that individual soul, and this universal Brahman? Atman, like when one attains like ultimate truth, Atman becomes part of Brahman. Yeah, right. So when we experience, when we understand this ultimate truth, when we reach enlightenment or liberation moksha, we realize that Atma, who we truly are, is the same as Brahman. So it becomes that. It's all Atma and Brahman are the same, but with Atma, it's what we have in ourselves. Brahman is the concept of it fully all together. So this non-dualism means that they are the same, but we have to figure that out somehow to reach that enlightenment. Because even though we're saying that right now, we don't necessarily know what that means. We don't feel it. We don't truly understand it. So that's the concept. Okay, so then if our going into what Brahman is,
right? So we just talked about it, this ultimate consciousness, this ultimate truth, the universe, however it might be. There are several paragraphs in here trying to describe what it is. And I think how would you describe it based off of what you read? What is Brahman? How can we think of it? Jagger, so like based on what I read, in the reading it says that Atman, which is like the individual soul, and then Brahman, which is the ultimate reality, you're identified absolutely. So like I just think that means like you know what they mean to you, like personally, really. Jagger. And so in that, like, I want to say, towards the bottom of the page, it has this whole paragraph trying to explain what Brahman is. Were you able to get anything out of that, or any kind of like slight understanding of how to conceive of Brahman and what that ultimate looks like? Yeah, so yeah, just at the bottom of the page it says Brahman is like the ultimate truth. I just think it means like it says in the reading, we must pierce through our hazy perspectives to understand our true being, and I think it's easy to realize like who we are, Jerry. Right. So it's this ultimate reality we can, as we are right now, as we think right now. It's not something we necessarily have experienced or can describe in a satisfactory way. It's really difficult to comprehend because it's beyond what our regular day-to-day living on this earth, experiencing things as humans with our minds. It's beyond how we comprehend the world on a day-to-day basis. And so it takes perspective shifting and various spiritual practices to really understand what Brahman looks like and what that is. And even more spiritual practice to figure out how Atman is truly who we are and how we are that. So we can have these hazy understandings. You can say it's the ultimate truth, but as far as actually understanding what that means, what that looks like, that might take us some time. That will take us some time, and it's hard to describe. So with that, it then goes in that last paragraph. It describes different forms or ways we can conceive of Brahman. So Jamal, what is the difference between Saguna and Nirguna Brahma? Can you repeat the last part? What was the difference between what? Saguna versus Nirguna Brahman. Oh, okay. Joseph Saguna was talking about so both of them are related to reality of Brahma. So Saguna was with attributes and Nirguna was without attributes. Right. So right now, what you defined as trying to think of and comprehend Brahman as this ultimate reality, but we were thinking of it as Nirguna Brahman without any attributes, which is hard to describe. We can say ultimate reality, but we have difficulty with that. When we think of Brahman with attributes, that is a lot easier. So what and Petra advises this as well, what does
Shankaracharya say about how we should relate to Saguna Brahman, or what we should do with that concept. Bobby? No, Bobby is not there. Jimmy, what does Shankara say we should do with Saguna Brahman? Or how should we do it? Jayada, can you please repeat the question? Yes. What does Shankaracharya say we should do with Brahman with attributes, Saguna Brahman? Jayada, we should with the attributes, he said that we should protect them and Jayada. So with those attributes, we can interact with it. So we've had difficulty kind of trying to conceive of and describe Brahman without attributes. But when we see Brahman with form, so in our case, what we do is we worship Thakura as Brahman. We think of him as the ultimate reality, and we worship him and he's a very real form that we can conceive of. So when we think of this concept, what we're doing when we praise Thakura is that by thinking of Brahman in a form, like we do with Thakura, it can be easier for us to comprehend that, and we can focus, as we talk about a lot, we can focus faith on that. And so that, along with understanding and trying to know more about Thakura, understanding more about Brahman and Atma, and how we relate to him, but using him with his attributes, being able to see physically the Vigraha of Thakura and think about and relate to him in this form, we might be better able to, and Thakura tells us we are better able to, learn more and get more established in this knowledge. So with that, we're out of time. I know there are still a lot of concepts here, and some of it might be hazy, especially this concept of Brahman. But the concept of Brahman and Atma being the same, this concept of us having faith and taking and understanding Thakura as Brahman, and that's our relationship with him and worshiping him. That is what we want to keep in mind as we read the Gita and as we learn more about the things that Thakura teaches us. That we're out of time, and Bhagavad Vinaya today is by Saraswata Sangha. Jai Guru. Jai Guru. Wishing Thakura Maharaj, all Bhai, Raj, and Yoga friends. I am fortunate that today is my birthday. I am currently in my sophomore year of high school, and the stress has already increased dramatically. Sometimes it is hard to find balance with everything going on at school, clubs, and social events, taking more and more of my time. No matter how tired and busy I may be, I sit in afternoon puja, and when it is done, I read Sri Sri Thakur's Upadesha. I have found many things that Thakur has said to be quite comforting, and he answers many of my questions. Before going to sleep, I take some time and meditate with the image of Thakur in my mind. This has helped me find tremendous focus and peace. I pray to Thakur to give me strength and fill me with Bhakti Dhamma. Jai Guru. Jai Guru. Prana Thakur. ଆଜି ଆମର ସେବା ପାଳି ସେବାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଏହା ଭାବ ବିନିମୟ କରିବି
आज भरत भाई जो पढ़े नाम संकीर्तन विषय ब्रज भाई भी बहुत किसी कहले मुझे भावी नी कि मुझे भावना करने जाऊँगी तो ता विषय ब्रज भाई कहबी तो मुझे कंटिन्यू करने चाहिए ठाकुर का नाम विषय विद एन एग्जांपल बहुत दिन पर मोर गोटे सर्टिफिकेशन एग्जाम थिला माने आई थिंक जुलाई और अगस्त मस तो मु प्रिपेयर होगी जाइए बट बहुत दिन पर गोटे प्रोमेट्रिक सेंटर जाकि मु एग्जाम दूसरी जोटा कि मो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं तो एग्जाम रो मिडवे ऑफ द एग्जाम मते लगला कि माने आई वाज सो नर्वस मते लगला कि ना माने हेबोनी आई शुड प्रोली बैक आउट माने इट वाज 3-4 आवर्स एग्जाम एंड आई शुड प्रोली बैक आउट और मो हेबिनी तापर भावले ठीक अछि कंप्लीट कर दिए जा हबो माने तापर एग्जाम सरियार मेरी 2-3 मिनिट अछि मु केमते गोटे चाइल्डिश वे भाविली कि माने मते मन पड़ला कि मु आम यंग एक्सपर्ट्स माने कहती कि आम एग्जाम देवा आगुरी ठाकुर का नाम नौ आम एग्जाम सबमिट कर आगुरी ठाकुर का नाम नौ तो मु भी भाविली कि मु भी एग्जाम सबमिट कर आगुरी ठाकुर का नाम नेबी तो भाविली केमती नाम नेबी 180 क्वेश्चन अच्छी तो मुझे ठीक अच्छे 180 थर मु जयगुरु कहबी आउ मु 180 थर जयगुरु कहली आ जस्ट सबमिट करली आखि बंद करदेली मैंने आखि खोलला लिखला पास होती मैंने मत मत मैंने मो आखिर खाली लुह गड़ी पड़ा मत लगला कि मुझे केबे पास कर नथांती बट मते एमती लगला कि जेमती मु खाली नाम नेछि बोली मध्ये मतलब ठाकुर एटे रक्षा करते तो माने ए सो इवेंट केते केते ओडा हुए जो लगे कि माने बेसिकली इट्स ट्रू कि हमें माने नामर केते शक्ति माने हाउ मच पावर खाली ठाकुर का नाम आउट एग्जांपल कहबी माने बेसिकली किछि दिन तले मते गोटे ट्रैफिक टिकेट मिलला माने इट वाज मु किछि ओवर स्पीडिंग नथला किछि नथला माने आई वाज जस्ट टेकिंग द राइट टर्न एट अ रेड सिग्नल व्हिच इज क्वाइट नॉर्मल पाखर गोटे पुलिस छड़ा आइतला मु राइट टर्न हला पर से मु पछे साइरन मारी के आसीला मोली कोन हला मु तो माने जस्ट माने राइट टर्न नेछि रेड लाइट रे तो मते से कहूची कि एठी लिखा है नो टर्न ऑन रेड माने मु फर्स्ट टाइम रियलाइज कली कि माने लिखा है नो टर्न ऑन रेड कि राइट टर्न दबा उठा नुहे माने इट वाज सो फुलिश कि होते वर्ष चली कि तो मु जानि नथली तो कथि मु तो कहली कि मु फर्स्ट टाइम इटा आसी मु जगह माने बिल्कुल अजाना तो माने आई डोंट नो दिस प्लेस फर्स्ट टाइम आई कम हियर प्लीज फॉरगिव मी जाबी से सुनिलानी मु से मो लाइसेंस लेके गला मो ठाकुर को नाम नउची कि माने कैंसिल कर दो वार्निंग दे दो किसी ना किसी किंतु आसला मते फाइन ता धर दे पळेला ओदला कि मु तो ठाकुर को जणैली नाम नेली माने काहे किसी कल्याण ठाकुर ओटा तो मुझे दोष भी नथला जस्ट राइटर नहीं थी अब से डेट देला माने कोर्ट डेट देला मुगली छाड़ो फाइन पे कर देबी तापर हठात मते मा कहले कि तो फाइन पे के करछो थरे जाओ कोर्ट को जाओ कोर्ट डेट किछि दिन आगु जाओ पुनो एटा हिची मु गली मु ठाकुर जणैली मु गली कोर्ट मते डर लागुथा कि मु जाई कहली कि एटा मो फर्स्ट टाइम एटा कि मु जान नथली राइट टर्न नहीं छी आ मु कोन करबी मु फाइन दे देबे बे तो से कहला कि नो दैट्स फाइन यू जस्ट पे अ बॉन्ड माने वेरी वेरी नॉमिनल चार्ज एंड वी विल गिव यू अ वार्निंग एंड लीव यू माने विश्वास कलेनी कि एमटी भी हे पारे मु अभी कि बोले फोन रो फाइन ता दे देबी it will be all over but scheme to kala ki na it is just a warning and you can go so this is the power mane ठाकुर को नाम नबा ठाकुर को जणे की काम करिवा एटे पावर माने another example is like basically एथर को सम्मेलनी जो फोर्थ वीकेंड रे था माने हम प्रोजेक्ट गोटे बिग रिलीज थला जोटा कि मते लीड करिया को दिया थला आ मु केबे भाबी नथले कि मु सम्मेलन जाई परिबी आ गले भी मु किछि भी अटेंड करि परिबी किछि भी करि परिबी केना इट वाज 3 days रिलीज एंड एतिर जुत्र मु बहुत काम थला मु आगरो ज्ञान भाई को कहबी थिले कि भाई मते लागुनी मु कर परिबी बोते आपन को घर टाबडा दे दियंतु मु कर आपन करे बसी काम करबी माने वेरी सरप्राइजिंगली जस्ट 10 days बिफोर द सम्मेलन ड्यू टू सम रीजन कोन लागी रिलीज ता पोस्टपोन हेला टू अगस्त लास्ट वीक माने मु केबे भाबी नथले मु खाली ठाकुर जणैली ठाकुर माने आपण माने इति कोल्तनी मु समय जाई कि भी किछि करि परिबिनी भल लागिबनी माने से रिलीज पोस्टपोन हेला तो बेसिकली ए सब इवेंट जो हुए आम ठाकुर को प्रति जो बिलीफ ता सेटाई बढ़ी जाए आ मते सेटा बढ़िया पई ठाकुर ए सब करंती एति कोइ कि मु खाली लास्ट आज कहउ चाहूची कि आज संघ पूजा बेलकू माने
फर्स्ट सेशन में बहुत डिस्टर्बेंस होता फोन रो तो मत लगुला कि अरे आज एमती डिस्टर्बेंस हमार अच्छी मु शुची कौन लिखार अच्छी मत शुणाइल ठीक से मत मत लगला कहीं डिस्टर्बेंस अच्छी मु गाड़ी दूसरी था मत जना पड़ा कि मो फोन जो डिस्टर्बेंस होची माने कितने खराब लगे कि पूजा चलती मु भावुची कहीं डिस्टर्बेंस होची देखो मो फोन जो डिस्टर्बेंस होची मु संगे संग फोन चेंज कली माने अन्य फोन टा नेली आ तापर डिस्टर्बेंस बंद हेला तो माने 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 इसो इवेंट लागे कि ना ठीक अछि माने चा होउची माने जस्ट थाको जणाओ माने काहू डोंट कंप्लेन जस्ट जणाओ आउ किछ करे ए तो रखिबी ताको जेइबो जय गुरु आज नाम विषय पढ़ा चलती आलोचना चलती निज अनुभव टी शेयर करी समय समय किसी कथा भावी मन भारी विचलित हो जाए केतबेले ठाकुर को मन पकई नाम ने मन विचलित कम होता है मन शांति आसे एक जिन शेयर करने चाहते जय गुरु जय गुरु भाई संध्या पूजा 6:30 आज्ञा जय गुरु आज्ञा एबे द्वितीय अधिवेशन शेष होगा जाऊँगी विदाय प्रार्थना और जयगुरु नाम कीर्तन पर श्री श्री ठाकुर महाराज को विश्राम गृह को नियाजिब और मध्याह्न भोग निवेदन कर आश्रम समस्त माँ भाई और यंग स्टूडेंट्स को मध्याह्न प्रसाद निवेदन रहा श्री श्री ठाकुर महाराज को संध्या पूजा संध्या 6:30 समय निमंत्रण करूँ जय गुरु जय गुरु प्राणर ठाकुर भक्त भाई माँ मैंने Yes. Can you please wait for the next YU session? Yes. Jai Guru. I invite all Bhais, Mas, Thakra, and young aspirants to the next YU session to be held on September 24th, 2023 at 10 a.m. CT. Jai Guru. जय गुरु प्राणर ठाकुर भक्त भाई माँ मैंने और यंग एस्पिरेंट्स मैंने आसंता रविवार रे सार्थक रश्मि पंडा माँ और मोर सेवा पूजा पाड़ी अच्छी से श्री श्री ठाकुर समस्त भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स मान को निमंत्रण जनाऊँ पूजा जोगदे पूजाटी को सफलमंडित करवा और आम मान को सेवार सुजोग देवे जय गुरु जय गुरु आज पूजा जानता व अजाणत भाव जदि किसी भूल त्रुटि हो श्री श्री ठाकुर महाराज आम आप संतान आम को क्षमा करदे मुझे कहली मैंने मोरी बहुत भूल त्रुटि बोधे मैंने मो फोन लाइन जो मत स्पेशली क्षमा कर जय दयामय श्री चरणे एहि निवेदना दयामय श्री चरणे एहि निवेदना निरंतर भावना करी स्मरण देव निरंतर भावना करी
जय
Jai Guru
जय गुरु 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 जय महाराज जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु भाई मैंने मैंने बृंदन भाई अटेंडेंस नेबे मोर किसी अनाउंसमेंट ना खाली जो मैंने भूली रेगुलर करते रिक्वेस्ट बृंदन भाई किसी अच्छी नहीं भाई जय गुरु जय गुरु अमिता भाई जय गुरु भाई पद्मिनी माँ जय गुरु भाई जय गुरु माँ अंजना माँ भाई जय गुरु माँ माँ जी दिव्यम बहुत भल सुंदर गाइला जय गुरु अनु भाई भाई जय भाई किसी जय गुरु ना काले काम करूँ उतना काम करूँ भी हमको नेक्स्ट सम्मेलन पे इनवाइट कर दिए नहीं ताकि से प्रैक्टिस कर ले ही विल कम टू द मेन सेशन ही सिंग्स लाइक एनी अदर बेटर देन सम गाइस ओके ना प्रैक्टिस करियो जय नहीं मां असलन तो देख गइली हां हां जय गुरु मां नहीं वी शुड एनकरेज एवरी बोलो गाइस जय गुरु तार बोलो आज्ञा आज्ञा जय गुरु तो एनकरेज करंतु से बारंबार गाओ जय सेतरे सेटा जय गुरु अनु भाई श्वेता माँ जय गुरु माँ अश्विनी भाई जय गुरु भाई संगमित्रा माँ जय गुरु माँ बरदा भाई जय गुरु भाई सोनिया माँ जय गुरु माँ बिजू भाई जय गुरु भाई विजय भाई जय भाई लिखिं से रही पारे जो कर ओहो अच्छा ओके सुमी माँ किन्या भाई जय गुरु भाई विश्वजीत बेहरा भाई जय गुरु भाई विशु भाई विश्वजीत भाई स्मिता माँ जय गुरु विश्वरंजन भाई जय गुरु भाई लिपिका माँ जय गुरु माँ ब्रज भाई जय गुरु भाई रश्मि पंडा माँ जय गुरु माँ बंदन भाई जय गुरु पद्मा माँ जय गुरु चिन्मयी माँ भाई जय गुरु माँ देव भाई लीना माँ देवाशीष भाई जय गुरु भाई देवीदास भाई जय गुरु भाई मनीषा माँ जय गुरु माँ देवी संबल भाई जय गुरु भाई स्निग्धा माँ जय गुरु माँ दीप्ति माँ जय गुरु भाई
जय गुरु माँ गुरदास भाई जय गुरु भाई अन्ना भाई चंद्रवती शिबान द्विवेदी माँ महावती तले माँ तले अछंती जय गुरु स्वाति माँ जय गुरु भाई माँ ईश्वर भाई भाई जय गुरु भाई प्रज्ञा माँ जय गुरु भाई ईश्वर भाई जय गुरु भाई वंदिता माँ जय गुरु भाई जय गुरु माँ लिप्सिता माँ जय गुरु भाई माँ महेश भाई जय गुरु भाई रश्मि चौधरी माँ भाई जय गुरु माँ मानस भाई जय गुरु भाई प्रज्ञा माँ जय गुरु भाई माँ मोनालिसा माँ नियर भाई जय गुरु भाई अर्पिता माँ जय गुरु भाई माँ पल्लविता माँ जय गुरु भाई माँ प्रभाकर भाई अछंती भाई जय गुरु गीता भाई माँ हाँ भाई तारे अच्छे जय गुरु माँ रवीना माँ भाई जय गुरु माँ प्रवीर भाई जय गुरु भाई मधुस्मिता माँ भाई मैं भी ज्वाइन करता हूँ जय गुरु प्रणामेश भाई एब्सेंट रहिए कहते दीक्षिता माँ पूर्वी माँ जय गुरु भाई और जय गुरु माँ रब भाई जय गुरु भाई गीता माँ जय गुरु माँ रमा भाई जय गुरु भाई कल्पना माँ जय गुरु भाई माँ संदीप भाई जय गुरु भाई अंजलि माँ जय गुरु भाई माँ संजीत भाई आश्रम अछंत ना आरती क्वेश्चन तो जय गुरु सार्थक भाई जय गुरु भाई पल्लवी माँ जय गुरु भाई माँ सौमेन भाई जय गुरु भाई सुभाषिष भाई जय गुरु भाई शिवानी महंत माँ जय गुरु माँ बनलता माँ अक्षंत जय गुरु माँ शिशिर भाई जय गुरु भाई सोनाली माँ जय गुरु माँ सौम्य भाई जय गुरु भाई अमृता माँ जय गुरु भाई माँ सुब्रत भाई जय गुरु भाई सुश्री माँ भाई जय गुरु सुधांशोला माँ जय गुरु भाई माँ सुधासिनी पंडा माँ जय गुरु भाई माँ सुकांत भाई जय गुरु भाई बसी ना जय गुरु माँ जय गुरु भाई सुप्रीत भाई जय गुरु भाई सस्मिता माँ जय गुरु भाई माँ सूर्यकांत भाई जय गुरु भाई सुकन्या माँ जय गुरु माँ शुभेंद्र भाई कहले ज्वाइन करते संगीता माँ नहांती स्वप्नेश्वर भाई जय गुरु से बसी ना जय गुरु माँ तारिणी भाई जय गुरु भाई आराधना माँ जय गुरु माँ ठाकुर भाई जय गुरु त्रिनाथ भाई जय गुरु भाई व्योमदा माँ जय गुरु माँ उषा माँ जय गुरु भाई माँ भक्त भाई जय गुरु भाई पूजा माँ माँ बसले भी सेपटे अच्छा जय गुरु वेदमती माँ जय गुरु भाई माँ सुशील भाई वाणी माँ
जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। लिपिका सुरंगी माँ। ज्योति पायल माँ। जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। तन्वी माँ। सुरेंद्र भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। विपिन भाई। जय गुरु भाई बापा इंडिया पड़े तो पढ़े लो नहीं। अच्छा अच्छा हाँ जय का को छाड़ी गली के का छाड़ी आ किसी बदवे आ किसी कहर अछि नाइ मोर हे मन को आसनु जय गुरु भाई टीवी गोटे जिनिस को किसी देखो सुना होता हां 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 जे हमर नारायण सेवा वर्ष माने गोल अनुसार बहुत कम अच्छी माने आगु एक्चुअली प्लान करथिले जो मान सब पार्टिसिपेट करछन जो डिजाइन असन से अंश किंते ग्रुप करके ताकर किछड़ा सेवा कले हमर संगर प्रासंता माने केवल टांपा रीजन करछन आ हमर एनएसएम एरिया रे मदर रास्ता सफा हेनी सेटा प्लान करा छी मासे सेचर करे केगा आ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो भाई माने पार्टिसिपेट करछन जे हम टीचर कोऑर्डिनेट करके करनते तो एटा भलो होता हमर बजेट अच्छी माने इतने खर्च करिया पेंगा हमें जमा $2000 खर्च करछे पर्यंत बीट इवेंट हेछि आ भितरे दिटा को पठाइ छ हमर रिपोर्ट रे पीसी रिपोर्ट रे पठाइ जे दिटा इवेंट वर्ष जा करे जोटी 1000 टका दिया हेछि आउ मध्य आपण जे चाहो छी कोपी माने फाइनेंशियली हेल्प करा जे परिबो जोटा माने संघ बाचिले हे परिबो जोटा ठीक अछि भाले जोटा माने प्रॉपर्ली यूटिलाइज हे परिबो फाइनेंशियली सम टंका आधेरे आउ नले किछि वस्त्र की नले किछि जेमते दिया जाए कहैतला गला वर्ष डिसेंबर आछले तेबे सब दिन गरीब लोक दिया जाइबो नले आपण माने जे श्रमदान करी करिवे नले फूड बैंक सेवा करिवे एमते इवेंट रे एनकरेज करी करिया पड़िबो आपण मानकु तो समस्त देखंतु खाली माने संगरे खाली जे प्रोग्राम न ता बाद मध्य नारायण सेवा किंतु समस्त मिसिप करिवा आटा संगर गोटे मेन जिंस तो जस्ट वांटेड टू रिमाइंड बिकॉज सेप्टेम्बर सरियोची अक्टोबर नवंबर डिसेंबर अगला टाइम पहला किछु टाइम ना करि करिया जे आसु क्वेश्चन आंसर करछि टेक्सास रीजन सेंते मते आपण अछंती दि किछ कोऑर्डिनेट करिके आपण भीतर करंतु आ माने जा कहलियो तो I just wanted to inform. Brother, anything on top of this? हम जमा 2000 खर्च करते हम राष्ट्रीय मैचिंग फंड आछि विभिन्न संस्थार हमर जो भाईमान दोकिन प्रणामी तार मैचिंग टका भी आछि हम यूटिलाइज करे आछि सेटा मध्ये किंतिया ए देश से लगे बैंक से बारे हम चाहते जे ये अमेरिका रे किने हम सेवा करी टमाटो के यूज करे पेंका सेटा की समस्त नजर रखंतु आ सेटा मध्ये आ प्रपोजल थिले कणले सेटा विषय अप्रूवल करिके हम एटा को आगे लाबा तुम जो करी पारिबे कारण नारायण सेवा बहुत गुरुत्व देखि नारायण सेवा करे शिव ज्ञान रे उसा करे संघर मध्ये जेका कोइछि पैसा मध्ये अछि खाली टिके भक्तन के सहायता करिया कथा आ अमिता भाई करथिले सेपटे मन ज्ञान दिया हेतला विजय भाई ऑर्गेनाइज करथिले कि चाहूछन सन कथा करबे कि कथा करछंती गेट सम मोटिवेशन और गाइडेंस चेष्टा करूं Oh, sorry, but